आज स्टार्ट करते हैं क्वासी-लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन and we have sent notes yesterday in which you can find what is the quasi-linear first order differential equation and what is the parametric form and what is the Lagrange's method, and how to solve that problem. Okay, so here the title of this lecture is quasi-linear, that is first order partial differential equation. Okay, so okay, are the functions of x, y, and z. Okay, so this is the general form of quasi-linear first order partial differential equation. Okay, so here you see that here this z you have to find the solution. Okay, so here z is the uh, in this partial differential equation, you see that this z is the dependent variable and x and y are the independent variables here. Okay, so this means you can find the solution of this partial differential equation like that. This z is the function of uh, x, y. Okay, so you can write here this is z will be the function of x, y, or you can write this is the z of x, y. Okay, so because this is that is a dependent variable and x, y are the independent variables. So if we solve this partial differential equation, so we get the solution. This is z, it will be the function of x and y. Okay, so here, if this is the solution, so you can write this as a form of this x, y, z minus z that equals to 0. And if we define this is the another function of x, y, z, so we can write here x, y, z. Okay, so if we find the gradient of this, so what is the gradient? So you know that this gradient operator is I del over del x, j del over del y, and k del over del z. And this gradient vector is basically this is the normal vector to this surface. Okay, so this is if this surface is defined by any function x, y, z, then what is your normal vector is this is the gradient of your vector f. Okay, this is your gradient vector. Okay, so if we try to find what is the so if we differentiate this with respect to x, so this becomes you can find this if we differentiate this with respect to x, so this is zx. If we differentiate this with respect to y, this is zy, and if the differentiate with respect to z, so this becomes 0 and this is -1. So these are the three I, j, k component. So we can write here this is vector form. Okay, so this is basically this is your gradient of f of this vector, and this is the normal of that surface. Okay, and if we write this equation, this equation can be also write in this form. This is a which is a function of x, y, z, and this is zx plus b, and this is zy that equals to constant c. Okay, or you can write this a zx plus b zy minus c equals to 0. We can write this in the vector notation ijk. So if this is a vector of ai, bj, and ck dot of this zx, zy, and this is -1. Okay, so if we dot product of these two, if we solve this ai, this ii, this az x plus b z y minus c that equals to 0. You can write this notation that equals to 0. So you know that if two vectors dot product are 0, this means these two vectors are orthogonal to each other. Okay, so this means this ABC is also is orthogonal to that gradient of this, because this vector is gradient vector. Okay, and this ABC is the orthogonal to that vector. So this is a vector ABC. Okay, and this lies in the tangent space of that surface. Okay,
defined by this thing, and this is basically this equals to z equals to z of fxy. Okay, so you can say that at each points x, y, z, this vector a, b, c, this determines the direction in which direction you called. This is also known as characteristics direction. Okay, so here we can construct the family of curves that had characteristics direction at each points. Okay, so what is the parametric form of this x, y, z? So x can be a function of t, and y with the parametric form of yt, and is equals to suppose function of that is t, that t be the parameter. So you to find a general solution or general integral of this problem, and here this is your problem. Okay, this partial differential equation, you know that what is your a. सॉरी सर, पीडीएफ पेज में क्या पढ़ा है सर? सर ये सब Yes, तो sir. लिखा आपने। सर आपका कनेक्शन लॉस हो गया था। लॉस हो गया था सर। Yes, sir. यस सर। सर आपको लगभग 10 मिनट हो गया सर लॉस हुए सर कनेक्शन। यस सर। ओके Yes, sir. ओके। सर स्टार्टिंग का पेज में बस थोड़ा सा था। इसमें ओके, तो ये पॉसिलिनियर आपके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। ओके, और ये जो z है दैट इज योर dependent variable and x, y are independent variable. This means the solution of this partial differential equation you can easily find z is the function of x, y. Okay, so इसको आप लिख सकते हो इस फॉर्म को, this minus z equals to 0 and this is the function of x, y and this is z. This means this is a function of fx, y. So you can write this is a function that equals to 0. Okay, and if you try to find the gradient of that, and gradient is defined by this thing, तो gradient अगर आप निकालो तो इसकी जो ग्रेडियंट होगी, तो इस फंक्शन को इस पूरे फंक्शन को f को आप x के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो z, तो दिस इज सिंपली zx. ओके, एंड हियर अगर आप इसको y के साथ डिफरेंशिएट करो पार्शियली तो यू गेट z ऑफ y, और z के साथ करें तो -1. दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ f. ओके, तो ग्रेडियंट ऑफ f ये आपकी चीज है, एंड आप जानते हो कि किसी भी सरफेस की जो नॉर्मल होती है दैट इज योर ग्रेडियंट ऑफ दैट. ओके, और ये जो इक्वेशन है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज a zx b zy दैट इक्वल्स टू c. इस फॉर्म को आप c को इस लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं. ओके, हियर a b c आर द फंक्शन ऑफ x y z. ओके, सो इफ यू कैन राइट दिस इक्वेशन बाय इन दिस नोटेशन a b c in vector form, suppose a I b j c k dot product of this zx I zy j and -1 k. If you dot product taking these two, to a of zx plus b of zy and minus c equals to 0. So this means the dot product of that equals to 0. This represents these two vectors are orthogonal. And what is this vector? This vector is orthogonal to that surface, and this abc is the orthogonal to this gradient one. This means this is lie in the tangent space, the tangent plane of this surface, and that surface is your z equals to fxy. Okay, so यही हम सारी चीजें इसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या ये सारी चीजें होंगी. ओके, एंड हियर यू कैन फाइंड दिस वेक्टर abc जो कि हमारे लाई करेंगे tangent plane of that integral surface, and surface is that surface is defined by z equals to
function of xy. Okay. ठीक है. तो यहाँ at each point of this surface, that is x y z, this vector ABC, this determines a direction in your this space x y z space. Okay, and this direction is known as characteristic direction, and you can construct a family of curves that satisfies these characteristics directions, and that at each point, and that is formed by the parameterization of that curve. So if we take this t with the parameter, and x is right as dx over dt, this is the first one, tangent over, if we find to this, so this equals to a, b, and c. If you define by this dx over dt, dy by dt, dz over dt, very similar to in the previous case where we have till our solution, where we can solve the linear partial differential equation, where we take dx over dt that equals to a, and dy by dt that equals to b. Okay, and here that space is your xyz, and your point is abc in three-dimensional space. So you have dx over dt, dy by dt, and dz over dt. Okay, so from this, usually you use this formula, and this formula is Lagrange's method to how to solve this solution of this first order partial differential equation. So here, if this is the dx over a that equals to dt, dy by b equals to dt, dz over d, c equals to dt, so you can find this formula, and this is your Lagrange's method. And if you have this a, b, c are given by, are comparing with the standard partial differential equation, and you can find easily what is the value of ABC, and then putting here ABC values of that, and you can solve. This is basically three equations from dx dy. This is first equation, this is the second order equation, and this is third equation. So from these any two you can find the solution, and the solution of that problem is also given by a theorem. We have already sent notes in which you can find the theorem, and that theorem is for any the general solution of this type of partial differential equation. You know that the general solution is f of uv. That, and what is u? U is basically this is a function of x y z, and this is equals to c1, and v be the also function of x y z, that is equals to c2. Okay, and here we can find this u and v by solving this this parametric form of characteristic equation of non-parametric form. Okay, so by this you can find the solution, and you can solve any problem. Okay, तो हम अब बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल फिर से हम नहीं आते हैं, हम सिंपल हम प्रॉब्लम में आते हैं. ओके, और बाकी चीज़ें आपके नोट्स में ऑलरेडी गिवन है. कहीं कंफ्यूजन हो तो हम आप पूछ लें. ओके, तो सीधे हम न्यूमेरिकल पे आए कि क्या न्यूमेरिकल है. ओके, तो प्रॉब्लम ये लेके चल रहे थे. सो फाइंड the general integral of here x, y and z. ओके, तो यहाँ पे आप अगर देखें तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है that is a of zx, b of zy that equals to c. Here a, b, c are function of x, y, z. Okay, so if a is function of x and y, and b be the function of x, y, and c the function of x, y, z, then this partial differential equation is a semi-linear partial differential equation. If a, b, c all three are function of x, y, z, then this is quasi-linear. And if a, b are function of x, y, and c also the function of x, y, then in that case this is a linear partial differential equation. Okay, so if we compare this with your standard form, so here you get a is equals to, this is x, and what is b is y. So this is a and b are function of only x and y. So this means this is your semi-linear partial differential
differential equation. Okay, so what is this type of equation, either semi-linear or quasi-linear? Both type of partial differential equation you can solve by this Lagrange's method. Okay, so here what is the associated system? So we can write associated system of equations, and this is you can write dx over a dy by b, and this is dz over c. Okay, and this is your Lagrange's method. This is Lagrange's method. Okay, so here this is dx over what is a is x, and okay, and here c is z here if you're comparing these two. So dy by y and dz over this is z. Okay, so if we try to solve these two equations, so you have dx over x equals to dy over y. So this implies log of x equals to log of y plus log of any c. So this implies you can find x by y equals to c1. Okay, and if we solve these two, so you can write this way, and the log of y is log of z plus log of c2. So here you can find y by z equals to some constant c2. Okay, so here this is your function of x y z that equals to any arbitrary constant. So you can write here this is your u, that is x by y, and this is also function of x by z that equals to constant. So this equals to y by z. Okay, so here what is the general solution? So the general solution of your problem is given by this f of uv that equals to 0. So we can write f of u means x by y and y by z. This is your general solution. Okay, so a derivation of that is already given in the notes. Okay, so here you what is the characteristics equation? So characteristics equation is dx over a dy by b dz by this is your characteristic equation. Okay, so if we take another problem, कोई और प्रॉब्लम लें और वहां पे हम देखें तो suppose find the general solution or general integral of the partial differential equation, and that equation is z x plus y. Suppose zx plus z x minus y zy, that equals to x square plus y square. Okay, so here square plus y square. Okay, so here this is a coefficient of zx. Zx की coefficient जो है this part is a. What is a here? So a is zx plus y. So this is function of x, y, z. What is b? B is also function of x, y, z. This is z x minus z. Okay, and what is c? C is x square plus y square. If we compare this with our standard form. Okay, so here a and b are function of x, y, z. This means this partial differential equation is belongs to quasi-linear first order partial differential equation. Okay, so इसके लिए भी आप characteristic equations लिख सकते हैं. So the characteristic equation, what is your characteristic equations are basically dx over a, and what is a is z x plus y. What is dy? B means this thing, and this is x square plus y square. Okay, and if you try to solve this differential equation, and you have to find this is u, this is function of x, y, z, that equals to something constant c1, and v x, y, z,
that equals to C2. Okay, so you can use this characteristic equation and find these two solution, and the general solution is U of V that equals to 0. So this is your general solution. Okay, so from that you have each. Here you can use what is the, if we try to find here, if you zx plus zy, and this is zx minus zy. Okay, so if we multiply by okay, so here you can use this relation. Okay, so if you use this, so here dx and dy, so this x minus y, and this is x plus y, and then try to take this variable separable method, or you can use the direct one, which is we can arrange this form y of this and x of dy. Okay, so y of dx, y of dx. Okay, y of dx means zy, this thing. Okay, because we have to find this y square, and this is minus this thing. Okay, so here what is the value is, if we multiplying by y, so this becomes zxy plus zy square, and here if you multiply by x, so z x square minus xyz. Okay, and here if you multiply by z, z square plus x square z. So if we adding these two and subtract that thing, this equals to 0. Okay, and similarly you can find okay, and similarly you can find this another one, which is x dx minus y dy minus z dz. Okay, so if you're multiplying that, this is again 0. Okay, so consequently you have if we solve this thing, so this is basically derivative of this is x and y, this is d of xy, so this is d of xy, and what is your z? Z is means z square, so this derivative of that is 2z, so you divide by 2, so this is this thing, and this equals to your 0, and from here you can find d of x minus y. So you can find this d of x square, and this is y of this. So this means x square minus y square. This is x square minus y square. This means 2x dx minus 2y dy. This means we have to divide by 2. So this becomes x dx minus y dx. Okay, and similarly minus, okay, so here we can write here, this is for minus of that, z square, just 2z, so we can take half, this equals to 0. So this means you have two solutions. This is x minus z square that equals to arbitrary constant c1, and here you have 1 by 2, or we cannot taking 1 by 2 simply because this, if you multiply by that 2c2, there is another constant. This means x square minus y square minus z square, that is c2. Okay, so here this is your u, and this is your v. What is the general solution? So general solution is f of xy minus z square by 2, and this is x square minus y square minus z square, that equals to 0. Okay, so this is the general solution of this given problem. Okay, तो इस तरह से आप किसी भी प्रॉब्लम को आप इस तरह से कर सकते हो. तो ये तो आपके सिंपल मेथड्स हैं, जो कि ये चीज आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन लेवल में आप पढ़ के आते हो. तो इसमें बहुत कुछ ऐसा इस तरह की प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस में आप कर लीजिए, चाहे वो आपकी सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हो या फिर आपकी क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हो, सभी को आप कर सकते हो. ओके, तो मेरा मेन इंटरेस्ट क्या है, हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कराएं, जैसे प्रॉब्लम आपने कल कर रखी थी. ओके, तो नेक्स्ट पेज ये सारी न्यूमेरिकल तो अंडर ग्रेजुएट लेवल की हैं, ये सारी आप जानते भी हैं और प्रैक्टिस कर लेंगे, और लगभग हर एक बुक में आपको सॉल्व एग्जांपल ये मिल जाएंगे. ओके, एमडी राज सिंघानिया की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें बहुत से सॉल्व एग्जांपल हैं, वहां आप देख सकते हो. ओके,
So if we take initial value problem, and if we consider the initial value problem, and which is del z over del x plus z del z over del y. Okay, or we take this one is del z over del y plus z del z over del y. Our initial conditions are when t equals to 0, that equals to fx. Okay, and this fx is basically this is smooth function. A smooth function means this is a continuously differentiable function. Okay, so this is a smooth function. Okay, or any function. Okay, so here we have to solve this initial problem. So to solve this initial value problem, we have to parameterize initial curve as when t equals to 0, this x means s, so we parameterize that x is s, and y is 0, y is 0, and z is equals to this z, this equals to f of x, or for x is s, so this means z is equals to f of s. So we parameterize this thing because this z of x0, that equals to fx. Okay, so what is the characteristic equations? So characteristics equations, we know that this dx over dt, this equals to a of xyz, and what is a here? A is the function coefficient of del z over del x. This is z only. Okay, so this you can write z. Okay, what is dy over dt? This is the coefficient of, that is your b, and what is b here? Here b is the coefficient of this del z over del y, that is 1. Okay, and what is del z over dt? This is coefficient of c, and here the c is 0, that equals to 0. Okay, so now if we let the solution be denoted as x, which is the parametric form s and t, and y, this is also parameterized by s and t, and our z, this is solution curve s and t. Okay, so we find that from this two, if you're solving ds over dt, okay, so if we integrate this first one with respect to t, so we can find this x, this is function of st. If we integrate that, so that equals to z, and if you integrate with respect to t, which is zt, plus integration constant, and that integration constant is free from t, so this is a function of s. Okay, similarly from second one, if we integrate this one, so this is a 1, so if you integrate, that equals to t plus integration constant, that is function of s. Okay, and here this is a 0, so if you integrate, that means 0 plus constant, so you have this z, this is function of st, this is a constant, arbitrary constant, that is function of s. Okay, so here we have to find the values of c1, c2, and c3 by using initial condition at t equals to 0. What is the value of that initial condition? Okay, so here this c1, c2, c3 are constants, and that is determined by using initial condition. Okay, so what is the initial condition? So the initial conditions at t equals to 0, are
this is given by this x at t equals to 0. Okay, so t equals to 0 means our x of st, this is this t equals to 0. What is the value at initial value? Okay, so this is s. Okay, so this equals to s. What is the y at t equals to 0? What is y? Y is 0. Y is 0. What is z? Z is equals to fs. Okay, so this equals to fs. So this is your initial condition. Okay, so here this means what is z? Z means x of s0 and y at s0. This is z of s0 and z of s0 is fs. Okay, so here if we using this condition, so if t equals to 0, if t equals to 0, so here t equals to 0, this means c1s and this equals to s. So from this, if you're using that condition, so from this you can find what is your value of c1 to c1s equals to s. Okay, so here second one, if we put in t equals to 0, this becomes 0 and this equals to 0. What is c2s? C2s is 0. Okay, and here if it t equals to 0, so z s0 and this equals to fs, this is c3s. So what is c3s? C3s is fs. Okay, so you can find this c1, c2, c3 and then now put back to is this equation x, y, z. So here this x equals to zt plus f, y equals to t, only t, and z equals to this fs. Okay, so this solution has a unique solution or not. So this means if the Jacobian of s means Jacobian of st with xy with respect to xt, this is non-zero. Okay, so this means there is unique solution. Okay, and then you have the solution of that x, y, and z in form of st. Then you can rewrite that solution in explicit form of x, y, z in terms of s and t. Okay, so in next page, what is the solution? So the solution is by सर वो एक बार इनिशियल कंडीशन तो कैसे रखते हैं एक बार उसको बता दीजिए t इज इक्वल टू 0 के बाद से ओके यहाँ पे आप इनिशियल कंडीशन ये गिवन है प्रॉब्लम में, तो यही चीज गिवन है आपके. ओके, प्रॉब्लम में ये चीज गिवन है यहाँ पे आपको. तो इनिशियल कंडीशन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने ये है हमारा x है, ये हमारा y है. ओके, तो x की वैल्यू अगर हमसे पैरामीटराइज कर रहे हैं और हमारा सोल्यूशन जो है st में आ रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे आपने x को एक पैरामीटर आपने s ले रखा है, तो यहाँ पे x को आपने s ले लिया, y आपका 0 है, तो z जो होगा दिस z इक्वल्स टू fx, जो कि हमने पैरामीटराइज किया, दिस इज योर fs. तो यू कैन राइट दिस इज योर इक्वेशंस. ओके, सो इफ t इक्वल्स टू 0, अगर हमने लिया t इक्वल्स टू 0 में हमारा क्या होगा s0, और x की वैल्यू हमारी क्या है, x की वैल्यू मेरी क्या है s है, y की वैल्यू मेरी क्या है 0 है, और z की वैल्यू मेरी क्या है fs है. तो x की वैल्यू हमारी s है, y की वैल्यू हमारी 0 है, और z की वैल्यू हमारी क्या है fs है. तो यही चीज आप यहाँ पे नोट कर रहे हो. ओके, ये वैल्यू क्या है मेरी, x की वैल्यू है, ये मेरी क्या है y की वैल्यू, ये मेरी क्या है वैल्यू z की वैल्यू. ओके, सो x की वैल्यू है जिसको मैंने पैरामीटराइज कर लिया है द पैरामीटर s. सो दिस मींस x की वैल्यू एट s0 दैट इज योर s, y की वैल्यू एट s0 दैट इज 0, z की वैल्यू एट s0 दैट इज योर fs. ओके, तो यही इनिशियल कंडीशन आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो ओके ऐसे ही हमें लास्ट प्रॉब्लम में भी, जो कल की प्रॉब्लम किया था उसमें भी ऐसे ही यूज किया था. ठीक, क्लियर हो रहा है ये या नहीं? अभी क्लियर, यस सर क्लियर हो गया. क्लियर है ना? ये इनिशियल कंडीशन इसी से यूज किया है ये. ओके, तो t इक्वल टू 0 में आप देख लें कि x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू क्या होगी. x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, और z की वैल्यू ये है. ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट पेज में हम कर सकते हैं कि ओके, तो फाइनली हमारा c1 c2 c3 आपने निकाल लिया. तो देयरफॉर आवर x इज
एक्स टी की वैल्यू जो होगी वो हमारा जेड टी प्लस सी वन की वैल्यू आपने एस लिख लिया, वाई जो है वो हमारा टी प्लस सी टू था तो टी सी टू की वैल्यू 0 है, और z जो है इसकी वैल्यू हमारी एफ एस आ रही है। ओके, सो द सॉल्यूशन बेसिकली दिस सॉल्यूशन आर गिवन बाय, ओके, सो हम इसको थोड़ा सा और रिराइट कर लें। सो द सॉल्यूशन हम थोड़ा सा इसमें कर लें कि z की वैल्यू मेरी क्या है, z की वैल्यू मेरी एफ एस है, तो हम इस फॉर्म में लिख लें, क्योंकि हमें लिखना है x और t के फॉर्म में लिखना है, तो हमारा x जो है एस टी, यहाँ z नहीं है, तो z की वैल्यू क्या है, एफ एस है, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस बिकम्स ओके, दिस बिकम्स एफ एस इंटू टी प्लस एस, ओके, बिकॉज दिस इज फंक्शन ऑफ एस एंड टी ओनली, तो z की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लें, और y क्या है मेरा एस और टी का फंक्शन है, सिंपली t, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और z जो है वो मेरा एस और टी का फंक्शन है, तो एफ एस है, ओके, तो नो प्रॉब्लम, अब सभी हमारे एस टी के फंक्शंस हो गए। ओके, देन वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द जैकोबियन। ओके, तो जैकोबियन मींस वी हैव टू फाइंड द जैकोबियन ऑफ with respect to st. Okay, so this is del x over del x, because del x over del s, del x over del t, del y over del s, del y over del t. Okay, so you have to find this value at initial condition. If this is not equals to 0, this is for existence of unique solution. Okay, so you have to check that this is this condition holds or not. Okay, so if this condition holds, so this is you have to find what is the value of here j. So what is the j? That equals to, if you differentiate with respect to s here, okay, so okay, at t equals to 0, you have to find that solution at t equals to 0. Okay, so this thing is f dash st, and this is plus 1. Okay, and this is x के साथ अगर आप t के साथ करोगे, this is simply fs, और यहाँ पे अगर हम करते हैं तो s के साथ, तो that becomes 0, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो आप उसे लिख सकते हो कि this becomes s के साथ अगर हम करते हैं तो f prime s t plus 1 s के साथ किया, और इसको अगर हमने t के साथ किया तो सिंपल fs आएगा, और इसको y को s के साथ किया तो 0 हो जाएगा, और t के साथ किया तो 1 हो जाएगा, और here when t equals to 0, this becomes 1. Okay, so this is 1, I think this is equals to 1 only. Okay, so this is non-zero, so this is non-zero, this along the entire initial curve. So we can solve for x of sy and t of xy. Okay, तो ऐसा है कि आप जैसे एक्सप्लिसिट फॉर्म में तो आप निकाल ही लोगे, पैरामीट्रिक फॉर्म में सोल्यूशन आप यहाँ तक तो आप निकाल ही लेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है कि x, y और z जो है ये सभी हमारे फंक्शन ऑफ एस एंड टी है, लेकिन आपको फाइनल सोल्यूशन, आपको जो फाइनल जो प्रॉब्लम है वो क्या है, एक्स वाई जेड की फॉर्म है, तो फाइनली सोल्यूशन आपको क्या निकले है कि एस और टी को फिर से आपको एक्स वाई के फॉर्म में आपको लिखना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यूनिक सोल्यूशन हो, इट मींस एस टी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई हम फाइंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये बताएगा आपका जैकोबियन।
इनवर्स फंक्शन थ्योरम आपने पढ़ी भी होगी, तो वहां पे इनवर्स फंक्शन के लिए आपको ये जो है उसके लिए आपको एस टी को फॉर्म ऑफ एक्स वाई निकालने के लिए जैकोबियन उस नेबरहुड पे नॉन जीरो होने चाहिए। ओके, तो रियल एनालिसिस आप ऑलरेडी सब सारी चीजें पढ़े हैं। यहाँ पे हमारे जैकोबियन अगर नॉन जीरो है, जैकोबियन नॉन जीरो है तो दिस मींस कि हम इसके सॉल्यूशन इसके फॉर्म में हम आप निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमें s इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई निकालना है और t इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई निकालना है, और ये निकल भी जाएगा क्योंकि जैकोबियन हमारा नॉन जीरो। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर लें और देखें कि अगर हम हमारा फर्स्ट वन है तो यहाँ से s की जो वैल्यू होगी, s की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू x माइनस, इट इज x माइनस x माइनस यहां से क्या हो जाएगी s की x माइनस एफ एस टी। ओके, और t की वैल्यू क्या है, तो x माइनस वाई और एफ एस क्या है, दिस इज एफ एस इज जेड, दिस इज जेड। ओके, सो दिस मीन्स आपके जो सोल्यूशन है वो इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। ओके, तो फाइनली जो सोल्यूशन है वो इम्प्लिसिट फॉर्म में आप इसका सोल्यूशन क्या लिख सकते हैं, सो द सोल्यूशन कैन also be given in implicit form। आप इसे दे सकते हैं कि z दिस इज फंक्शन ऑफ s है एंड दिस s yz। ओके, तो s is x minus yz, तो दिस इज योर सॉल्यूशन z इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x y z। तो ये आपका इम्प्लिसिट फॉर्म में आ गया क्योंकि z इक्वल्स टू यहाँ भी z है। एक्सप्लिसिट फॉर्म कब होता है, जब z इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ fxy। ओके, तो ये आपके इम्प्लिसिट फॉर्म में। तो इसे देखिए, टाइम आपके हो रहे हैं, एक और न्यूमेरिकल मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपसे सॉल्व करें, सॉल्व दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉरी z of x plus y zy that equals to x, and initial condition are given, that is z initial conditions are given, this is z of x1 that equals to 2x। ओके, जहाँ पे x आपका रियल है, xy belongs to R2 है। ओके, तो आप इसको सॉल्व करें, zx y zy that equals to x where initial condition is given this thing। इनिशियल कंडीशन ये दिया हुआ है, तो इस इनिशियल कंडीशन में a की वैल्यू क्या है, दिस इज z, b की वैल्यू क्या है y, c की वैल्यू क्या है मेरी c। ओके, तो यहां से आप क्या करेंगे, dz ओवर dx ओवर dt इक्वल टू z, dy बाय dt इक्वल्स टू y एंड dz ओवर dt इक्वल्स टू z। ओके, तो वहां से आप इसको आप फाइंड कर लें, और इनिशियल कंडीशन जो है वो आपकी गिवन है, इसको आप यूज कर लें। तो यहाँ पे आपकी जो ये s है, मींस यहाँ पे आप लिख सकते हो व्हाट इज इनिशियल कंडीशन को अगर हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करें तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि ये x की वैल्यू है और हम उसको क्या कर रहे हैं, पैरामीटराइज कर रहे हैं। व्हाट इज s0, t इक्वल्स टू 0, तो दिस इक्वल्स टू s। ओके, दिस इज x। y के लिए क्या होगा, दिस इज 1, y ऑफ s0 दैट इक्वल्स टू 1, and what is z के लिए क्या होगा, दिस इज 1, and what is z of s0, तो z के लिए हमारी वैल्यू क्या आ रही है, दिस इक्वल्स टू 2s, दिस इज 2s, दिस इज योर इनिशियल कंडीशन। ओके, तो पहले तो आप इसको dx by dt कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेंगे, dx ओवर dt dy by dt z ओवर dt। ओके, वहां से आप सॉल्व कर लें और x की वैल्यू इन टर्म ऑफ st आप निकाल लिया, देन यूजिंग इनिशियल कंडीशन यू गेट फाइनल सॉल्यूशन। ओके, तो उसके बाद फिर आप फाइनल सॉल्यूशन आपने निकाल ली,
तो अब आप उसकी क्या करिए, जैकोबियन चेक करें। जैकोबियन अगर आपका नॉन जीरो है, दिस मींस कि आप इस तरह के सोल्यूशन आप निकाल सकते हो, यूनिक सोल्यूशन, अदरवाइज उसके यूनिक सोल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर आप जैकोबियन निकाल लें, अगर वो t = 0 पे अगर वो नॉन जीरो है, दिस मींस कि उसके यूनिक सोल्यूशन होंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, तो इतना ही करते हैं, और बाकी फिर हम नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे। आज बड़ा ही जल्दी किया है, बड़ा ही रफ वे में। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, या फिर जैसा करेंगे। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो जाने से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अब चलिए। थैंक यू सर। ठीक, फिर भी कहीं ना समझ में आया हो तो उसको बिल्कुल निसंकोच आप पूछ सकते हो। और एलिमेंट्री ये सारे एग्जांपल्स हैं, इसको आप एमडी राय सिंघानिया की बुक में आपको मिल जाएंगे सारे सॉल्व एग्जांपल, वहां से आप कर सकते हो। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Yes, sir.